Good afternoon, students. Welcome to the discussion of Railway Group D Test 50. We'll start with question number 18. We'll start with question number 18. That is, which of the directive principles can be, which of the directive principles can be described as Gandhian in character? As you all know that DPSP, we have three different types of DPSP. So one we have is the socialist part. Then second we have is the Gandhian principles. All right. So basically, this was laid down by Mahatma Gandhi. Third is the neoliberalism. Yes, socio and liberalism. Just a minute. Yes. So third we have is the liberal and intellectual. Okay, the neoliberalism that we said, that is liberal and intellectual. Fine. So these are the three different types of DPSP that we have. In the question, it is asked which of the directive principles can be described as Gandhian in character. All right. So Gandhi especially focused on the village panchayats and on small scale or the cottage industries. So answer is option B, that is organization of village panchayats as effective units of self-government. Fine. So B is the answer to this question. Now moving on to the next question, we'll be switching to question number 23. Yeah. Yes. So the annual report of the UPSC is submitted. The annual report of UPSC is submitted by the chairman of Union Public Service Commission, that is UPSC, to president. The annual report states that, just a minute, some error. Yes, the annual report of UPSC is submitted to the president by the UPSC. The annual report of UPSC has the total number, how many exams were conducted, and how many candidates were selected. So these all things are detailed mentioned in the annual report of UPSC, and it is submitted to the President of India, neither to the Supreme Court nor the Prime Minister. As you know, UPSC is an constitutional body. It is responsible for conducting all Group A and Group B examinations of central government. Fine. So answer to this is option A. Moving on to the next question, question number 24. When does Lok Sabha or Vidhan Sabha election candidate forfeit his security deposit? Forfeit his security deposit means you have to, before election, the candidate have to, so before election, the candidate has to submit, or the candidate has to deposit a security fee. Fine. So that fee gets forfeited. That means that is a refundable amount. It becomes a non-refundable if the candidate fails to secure 1/6 even of total votes scored. That is 1/6 of the total votes scored. So if a candidate has total number of votes that is being total votes that is being polled. All right. If the candidate fails to get 1/6 of this total votes polled, 1/6 of total votes polled. If the candidate's number of votes is even less than this, then the amount that the security deposit provided by the candidate will be forfeited and it becomes non-refundable. Fine. So moving to the next question, question number 25th. Members of Union Public Service Commission. There is a question from UPSC again. So as you can see, UPSC is actually a very hot topic right now because of postponement of civil services examination,
It is likely to be held on October 24, but still the decision of the Supreme Court is awaited. That's to be held, the verdict to be given tomorrow, that's on the 30th. So I would request you to kindly focus on UPSC, the various aspects, the acts under which the UPSC is formed. It's a constitutional body, and the chairman of this UPSC is appointed by the president with the aid and advice, that is the aid and advice of the Prime Minister. Alright, this is not a discretionary power of the President. UPSC's chairman is appointed by the President on the aid and advice of the Prime Minister. Fine, so question is, members of Union Public Service Commission can be removed by Parliament after resolution adopted by two-thirds of majority. No, it is not at all Parliament. This is a constitutional body. President on unanimous recommendation from the Union Council of Ministers. No, not at all. If the Council of Ministers recommend the President to remove the members of the UPSC, it is impossible. They cannot be removed. President on the basis of an inquiry and report by the Supreme Court. Yes, this is the answer. The President appoints the chairman of the UPSC on the aid and advice of Prime Minister, and also the removal of the members of UPSC is done by the President by an inquiry report. If a charge is filed against any of the member, then by the inquiry report submitted by the Honorable Supreme Court to the President removes the members of the UPSC. So the answer to this question is option C, President on recommendation of Central Administrative Tribunal. No, Central Administrative Tribunal does not deals with this. Central Administrative Tribunal deals with the matters of administration between the states. Fine, so answer is option C. So moving to the next question, that is question number 26. Question number 26. What is the implication of central government granting special status to a state? Yes. Now special status to a state, recently you might have seen that the special status of Jammu and Kashmir was taken off. So special status is a very important topic. In the special status, the particular state enjoys certain privileges. Okay, it enjoys certain privileges. So it states that what is the implication of central government granting special status to a state? Substantially large percentage of central assistance will be given as grant in it. Yes, this is a factor of special status. Say if we have so many states in the northeastern, fine, the northeastern states they normally have special status in which they are also given grants in aid. Grants in aid is a financial support to the state for its development. So one is a possible answer. The extent of loan as a percentage of total assistance will be low. Not at all. Extension of loan is not done at all. Rather, they are provided grants in aid in alternate. So see, current account budgetary deficit will be bridged by the central government. No, it is not a point. Then we have, yes, the extent of loan as a percentage of total assistance will be low. Yeah, fine. It is low over here. I skipped this particular point. Yes, B is a possible answer. A is a possible answer. So answer is option D. Both A and B are correct. Well, so let's move to the next question now. The civil affairs like marriage, divorce, inheritance. Let me move on to the next question. The civil affairs like marriage, divorce, inheritance, etc., which has been authorized by the Constitution to make legal laws. So the civil affairs like marriage, divorce, inheritance, etc., which has been authorized by the Constitution to make legal laws. We have central by union list of the Constitution. No, it is not a possible answer even. States by the state list of Constitution. No. Then we have center and states by concurrent list of Constitution. Yes.
It is the right answer. It is by center and state by the concurrent list of the constitution. The different subjects in the constitution are divided into three types of list. One we have is the union list, then we have state list, then we have concurrent list. Now, union list is completely under union. State list is under state. Like we have police is a subject. Not Delhi police. Delhi police. Delhi is a union territory. Delhi police comes under your union government. State police. Normally police comes under the state list. Fine. So other than Delhi police, rest all police comes under state list. Concurrent is both union plus state have a right on it. Fine. So divorce, marriage and inheritance are civil affairs that are dealt under concurrent list. Then religious authorities have relation to individual affairs. No, religious authorities that do not have, they simply can state something related to the religion under their fundamental right. Fine. So answer to this question is option C. Then coming to question number 28. Who is empowered to transfer a judge from one high court to another high court? It is the President of India. Fine. All appointments in the judiciaries are done by the President, and the transfer of the judge is also done by the President in consultation with the Chief Justice of India. Fine. It is with the CJI, the President of India consults, and the transfer of the judges is done by solely by the President of India. So answer to this question is option B. Moving to the next question, that is question number 29. Is the Supreme Court of India acts as a federal court when it deals with. So it acts as a federal court when it deals with interstate disputes. Fine. Recently you might have seen so many river disputes are taking place. There was a river dispute regarding Kaveri. Okay, so it is between Karnataka and Tamil Nadu. Between Karnataka and Tamil Nadu. So there was a case filed by both the states in the Supreme Court. So in that case, Supreme Court acted as a federal court. It acted as a federal court to resolve this interstate disputes. Interstate disputes. So answer to this question is option B. Coming to next question of 30. Which among the following legislation gives constitutional status to three-tier Panchayati Raj system? Now if you go through the schedules mentioned in the constitution, you can refer to Lakshmikant for it. Yes, if you go through the schedules, you will find that 73rd amendment. Okay, this is of course a constitutional amendment of 1993. It deals with Panchayati Raj system, and another popular constitutional amendment act is the 74th Constitutional Amendment Act. This deals with municipality. Alright, so very important to remember, as government is right now focusing on local governance. So you must be thorough with this Panchayati Raj system and in the municipality system. Fine. So municipalities, you must know what is municipality, what is a municipal council, where there is a port trust. Alright, if a particular city has a port, then the port manages the administration, the port administers the particular locality. Fine. So answer to this question is option B, Bombay. That is the 73rd is related to Panchayati Raj. 74th Amendment Act 1993, it is mentioned over here, is related to the municipalities. Fine. So let us now move to question number 38.
Question number 38. According to special theory of relativity, the mass of a particle. Now, special theory of relativity was given by Einstein. Was given by Einstein. Fine. So, in as per him, that if we take an object, so this is an object. Now I place this object in a vacuum. So if I talk a vacuum, this is nothing but equal to your zero gravity. Okay. So in a zero gravity chamber I am taking. Alright, so in zero gravity chamber he said that if I am increasing the velocity of this particular body, if I am increasing the velocity of this body, and if you try to see a relation between the velocity and the mass of a body, you will see that with increase in velocity the mass will increase abruptly. The slope is quite steep over here. Alright, the mass increases to infinity. Fine, so this was a special theory of relativity that was proposed by the Einstein, and this scenario happens with respect to observer. Okay, so this happens with respect to observer. So answer is option A. Moving on to next question, question number 39. Yes, rainbows are produced when sunlight. Now the basic principle of rainbow is the dispersion of light plus refraction. Alright, so both these phenomenon contribute to the formation of rainbows. Alright, so incident on rainbow drops. So rainbows are produced with sunlight. Incident on raindrops hanging in the atmosphere is dispersed after suffering refraction. No, it is not a possible answer. Then incident on raindrops hanging in the atmosphere is dispersed after suffering refraction and internal reflection. Yes, this is correct, because these are the raindrops that is hanging in the atmosphere. So once the sunlight enters through it, it will undergo refraction. After refraction there will be internal reflection. Why? Because angle of incidence has crossed critical angle. Okay, it has crossed critical angle, normally denoted by theta c. Okay, so since it has crossed the critical angle, so it will undergo total internal reflection as well. Okay, so option B is the answer to this question. So next, coming to question number 44. Coming to question number 44. Cement is strongly heated. Cement is formed by strongly heating a mixture. Yes, cement is formed by strongly heating a mixture of. Now, basic component you must know that it is limestone and clay. Also, sometimes silica is added as a dehydrating agent. Silica is a dehydrating agent. Fine. So cement is formed by strongly heating a mixture of limestone and clay. So answer is option B is the correct answer to this question. Limestone, graphite. No, graphite doesn't play any role over here. Chalk, no, not at all. Clay and graphite, no, again it is not. So it is only option B is the possible answer. Fine. So that's it from my side. The next questions will be left out questions will be continued by some other faculty. Do hold on. The next faculty will be arriving within a short while from now. Thank you for joining me.
हाड़ी टच करछन रेडी तो या तो हम पढ़ डिग्री तो कर Good afternoon, students. Which one of the following type of erosion is responsible for the formation of chambal ravines? एटा हमर जीव ज्योग्राफी रो soil erosion chapter number 1 टा soil erosion chapter माने जेतळे वर्षा हुए माटी रे एई अंशटा ढिला ही जाए वर्षा पानी एई एरिया टा वीक करि दिए तो छिट्टी की वीक कर दे सेटा को कुहा जाए स्प्लैश इरोजन एटा ला फास्ट स्टेप तापरे एटा ला फास्ट स्टेप सेकंड स्टेप रे पानी सहित गोटे माटी रो लेयर टा भासी भासी गोटे जगह आ गोटे जगह को स्थानांतरित हो सेही टाइप रो इरोजन टा कुहा जाए सीट इरोजन एटा ला स्प्लैश एटा पानी सहित जाउची कोन जाउची गोटे लेयर रो माटी लेयर टा जाउची तापर जाउ जाउ आस्ते आस्ते से गुडी गोटे रास्ता खोजिबो टिके खंडिया हे जो मन करनी क्रैक भलिया हेतिबो स्थान एई टाइप रो क्रैक देखि एडी क्रैक दे छोटो छोटो माने एमिति हे खालटा ए टिके हेतिबो मन कर एमि भूमिटा अछि ना एमि खालटा एमि खालटा हे एमि भूमि अछि एडी खालटा हे एई खाल देकी जिबा आसिया करियो पानीटा सेइटा कोनती रील इरोजन ये ला थर्ड स्टेप तापर फोर्थ स्टेप रे से खालटा पूरा बड्डो हे जो पूरा एई टाइप रे माने बड्डो खाल हे जो जेमि केनाल पानी गला बळिया खाल हे जो पूरा एटा एई टाइप रे कुहा जाए एटा कुहा जाए गुल्ली इरोजन तेणु चारि प्रकार रो इरोजन आमे देखिले आकेला स्प्लैश इरोजन सीट इरोजन रील इरोजन गुल्ली इरोजन रील इरोजन नॉर्मली सब जगह देखा जाए छोट छोट खंडिया हे पानी जाउथो से बाटे तो गड़ी गड़ी जाउथो माने कादुओ माटी कादुओ मिसिदिया पानी ए गुल्लीटा मोस्ट देखा जाए चंबल बेसिन रे चंबल नदी आमे जानि दिबो जोटा गोटे ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ए चंबल रे जो सॉइल टा नहीं चंबल रे माने बेसिन रे से सॉइल टा एक्चुअली टिके अछि सॉफ्ट रहउछि सेही लागि वर्षा पानी सहित कनेक्टेड एडी माने फटे दिए सॉइल टा आराम से फटे देकी
ए गुली इरोजन देखा जाए आ से गुली इरोजन टाकू चंबल बेसिन रे कुहा जाए कहला रेवाइन्स टिके गुली जदी चौड़ा हो जाए एक्चुअली हो जाए रिवाइन आउटे चौड़ा हेले रिवर सबुठ बड़ होला रिवर खालटा सब बड़ सेकेंड होला रेवाइन थर्ड होला गुली आ गुली इरोजन को चंबल बेसिन रे ताकू कुहा जाए कहला रेवाइन गुड आफ्टरनून तो नंबर 1 बुझिलो को जगह एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा रेलवे रे आसीबो 100% आसीबो रेलवे रे ए क्वेश्चन टा बहुत कारण सॉइल इरोजन एटा सबुठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन चंबल बेसिन रे ए टाइप रो इरोजन टा देखा जाय एटा ला फोर्थ स्टेट एटा ला नंबर 1 री माने सेकंड होला सीट रील होला थर्ड फोर्थ होला गुली फोर्थ आ गुली परे भी अछि गुली परे कुआ जाय रेवाइन्स ये ला फिफ्थ स्टेज जोटा को गुली और रेवाइन समान भाबंती समझते कि गुली टू टिके आउरे खालो दे ए खालो टू अधिक चौड़ा खालो हेने रेवाइन को जाय और रेवाइन टा अधिक खालो हेले पुनी हेइजो कोन रिवर्स तेणु ए गुली इरोजन मोस्ट लेखा जाय गोटे चंबल रिवाइन चंबल बेसिन रे ए गुली गोटे रेवाइन माने ए गुली ताकू ही रेवाइन को जाय गुली नंबर 1 सैला नंबर 2 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सर्कल देखो आम पृथ्वीटा एई भली सर्कल एटा स्फीयर किंतु आम पृथ्वी एई भली नुह आम पृथ्वी वाला एटा एई टाइप रो पृथ्वी एई भली नुह स्फीयर नुह स्फेरॉइड स्फेरॉइड को जानजो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रु टिके कंप्रेस हो जाइछि नॉर्थ पोल रु साउथ पोल के कंप्रेस हो जाइछि एई पट्टा एई जो सर्कल टा क्लियर हो एटा कोन एटा इक्वेटर कोन पोलर सर्कल पोल टच करछ एटा जो सर्कल टा नै बड़ सर्कल टा एटा कोन इक्वेटर मते को एई सर्कल टा बड़ होबो ना एई सर्कल टा बड़ अरे एई सर्कल टा बड़ होबो ना एई सर्कल टा बड़ होबो एई सर्कल टा बड़ होबो एटा कोन इक्वेटर जोटा कोन 0 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एईटा ला सबुटला ग्रेटेस्ट सर्कल हमर PV9 नंबर 1 रे रश्मिता स्वाई नंबर 1 रे आंसर होला डी नंबर 1 रे आंसर होला डी नंबर 2 रो आंसर देखो नंबर 2 रो PV9 नंबर 2 रो आंसर PV9 एटा नाटा ना कोन PV9 अरे PV9 ग्रेटेस्ट सर्कल आर्कटिक सर्कल कोन लिखि दो ग्रेटेस्ट सर्कल आर्कटिक सर्कल नो कारण एडाला अर्थ एडाला सबुठ बड़ सर्कल एडाला इक्वेटर ताटू छोट होला कोन एडा कोन ट्रॉपिकल सर्कल जो ट्रॉपिक कैंसर ट्रॉपिक एटा आर्कटिक आउरी छोट तेनु सबुठ बड़ होला एटा कोडा एटा बड़ कारण नॉर्थ पोल आड़ गला साइज ता सर्कल साइज छोट रही जाए आर्कटिक सर्कल एटा आर्कटिक सर्कल एटा ला इक्वेटर सब बड़ हला तेणु नंबर 2 आंसर कोन हो इक्वेटर किंतु हमर जेतु हमर अर्थ शेप कोन स्फेरॉइड अर्थ शेप ला कोन स्फेरॉइड बोली स्फीयर एला सब सर्कल समान हैता नै सर्कल समान हैता तो जेतु हमर अर्थ र शेप ला कोन अर्थ शेप ला कोन स्फेरॉइड से लगी सब बड़ हो कोडा हो इक्वेटर नंबर 2 रो आंसर होला बी नंबर 3 hot deserts are generally found on the western margin of tropics
on the western margins of tropics. शुण नंबर 3 टा भला रे शुण नंबर 3 टा बुझा कहूची कारण ज्योग्राफी इज मेन पार्ट जदि तुमरो साइंस रहउची आउटे बिना साइंस रो साइंस ता बेसी इंफोसिस दिया छी आउटे बिना साइंस जोडा रहउची जो बिना साइंस ज्योग्राफी ता बहुत इंपोर्टेंट रेलवे रे हिस्ट्री टू भी ज्योग्राफी बहुत इंपोर्टेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी रो पूरा इंपोर्टेंट बहुत एटा हमर इंडिया हमर जान पृथ्वी जो निज चारि पटे घुरुची निज ये चारि पटे जो घुरुची ता कोन से जो घुरुची निज चारि रोटेशन जोगु कोन होउची रे रोटेशन जोगु गोटे फोर्स क्रिएट होउची ता नाला कोन कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस फोर्स ला पडियो परीक्षा रे एटा वेरी इंपोर्टेंट रेलवे में मन रखियो पचारियो ए फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ तुमे मारियो सेंट्रीफ्यूगल तापरे ग्रेविटेशनल एवडा नो आंसर ला कोरियोलिस फोर्स जोगो कोन प्रभाव ता पड़े एटा जानते हम इक्वेटर आर टू डीटा पार्ट डिवाइड करछि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आउडा ला कोन सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे इक्वेटर माने जो कोरियोलिस फोर्स जोगो जो फास्ट मूविंग विंड उडा नहीं जदि एमिन विंड आछि राइट को पड़े जदि विंड एमिन जाउछि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ता राइट को पड़े राइट को बुली जाए एडी कोड बुले राइट को बुली जाए सदर्न हेमिस्फीयर रे लेफ्ट को बुली जाए लेफ्ट एडी मानकर ट्रॉपिक एरिया रे ए जगह रे अछि आमे जानि जदि एई जगहटा ला हॉट माने एई जो जगहटा हबो कोन लो प्रेशर ऑटोमेटिकली रहिबो एई पट्टा ला कोन हाई प्रेशर हॉट जोटी हबो लो प्रेशर केमि ला कहलो हॉट हेले हम जो एयर पार्टिकल मध्य रे जो बॉन्ड ता जो नै कि निज जो जड़ित होई कि रहउति बेटा ढिला हेला परे से कोन हेइबो माने सब छड़ा हे प्रेशर ता कमी जो लो प्रेशर हे पवन ता जेतल आसीबो देखो गोड़ उदाहरण दो जे पवन ता आसु एमिति आसीबो एई जगह बसी एई बेले आसीबो कारण काई कि हाई प्रेशर सबले कोन लो प्रेशर को आसी हाई प्रेशर कोडी लो प्रेशर आसीबो ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कोन हेइबो से राइट साइड को बकी जिवो काई कि राइट साइड बकी होला कहलो कोन ता राइट साइड बकी होला राइट साइड बकियार मेन कारण होला कोन राइट साइड बकियार मेन कारण होला कोन कोरियोलिस फोर्स मु कहति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे कोरियोलिस फोर्स एटा मन कर अर्थ एटा ट्रॉपिक एई जगह रे कोन हो एमिति आसियो पवन तो आनिबो जो पार्टिकल उडा हमर ओशन से नै के आस्तिबो जो वाटर पार्टिकल सब एई जगह रे वर्षा हिजो ता ईस्ट साइड रे एपटू को आसिला को आ वर्षा नथिबो ता कर्पूर उडी जाइतिबो ता कन्ना जळी जाइतिबो तार किछि नथिबो एई जगह रे पूरा शुष्क से लागि वेस्टर्न साइड रे हमर डेजर्ट हे जाय एटा कोनी जे पवन उडा आसे ने एटा कोनी जे टू ईस्ट याड माने ये ईस्ट पटु आसुची ता ईस्टर्लीज को जाय आ ईस्टर्लीज गुडी को कोन होई ईस्टर्न साइड रे वर्षा कर दिए वेस्टर्न साइड रे वर्षा हे पहुंची परिबो नै पवन आसीबो कि से पवन रे ऑलरेडी वर्षा करी के एटू ऑलरेडी माने कोन पानी उडा सरी जाइतिबो एटी शुष्क तेनो एई वेस्टर्न पटडा कोन हियो वेस्टर्न में डेजर्ट हो जाए ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ट्रॉपिक्स तेडू 3 नंबर आंसर हो बी 3 नंबर आंसर होला कोन बी एबे जिबा 4 नंबर द मून कंप्लीट्स ओवर सन देन हमर रे सोलर एक्लिप्स हुए सूर्य मझरे चंद्र एला पृथ्वी मून रो
shadow टा पडुची जेतबेले कंप्लीटली कवर द सन जेतबेले तार shadow टा पूरा कंप्लीट ताकू कुआ जीवो हमर मोस्टली तीन प्रकार रो सोलार एक्लिप्स अछि गोटे अछि टोटल सोलार एक्लिप्स आ गोटे अछि पार्शियल सोलार एक्लिप्स पार्शियल आ गोटे ला एनुला टोटल माने जेतबेले पूरा कोइ कोन कहजरी माने द मून कंप्लीटली कवर्स द सन माने एट तुमे थिबो जेतबेले टोटल सन को देखि पारिबो नाही ता हेले तुमे जानिबो माने ए एरिया टा कुआ जाए अम्ब्रा जोटा माने कोन कहलो मन करो आउ थने कर दू एटा ला मून एटा ला तुमे अर्थ रो छ तार गोटे शैडो जाए এই যে শ্যাডোটা করা যাবনি এইটা হলো অম্ব্রা এই শ্যাডোটা जो যাওনি এইটা হলো পেনুম্ব্রা অম্ব্রা যদি এইটি তুমি ঠিয়া হইছ তুমি আউ সূর্যকু আউ দেখি পারিব না সূর্যকু যদি দেখি পারিবনি মানে তুমি কোড ঠিয়া যে গলো অম্ব্রা রে ঠিয়া হইছ সূর্যকু দেখি টোটাল দেখি পারনো মানে টোটাল সোলার एक्लिप्स तुमको देखा जाउची माने जानियो तुमे को जगह के अम्ब्रा अम्ब्रा माने शैडो रो सबुटु गाढ़ अंशटा शैडो रो सबुटु गाढ़ अंशटा को कोन कहजे अम्ब्रा गाढ़ अंश माने गोटे शैडो टाइप मिनि मन कर आछि तार गोटे पर्टिकुलर जो अंश बेसी शैडोटा गाढ़ हेतो कहटा अम्ब्रा आ ता साइड टा जोटा झापसा जोटा न एटा पेनुम्ब्रा तुमे सन को देखि पारु न माने तुमे अम्ब्रा रे अछ और 4 नंबर हबो बी 5 नंबर ला व्हिच ऑफ द an alternative theory to Big Bang theory. Big Bang theory developed 1948, starting the universe does not change even though it is expanding over time. Big Bang theory कहूची नंबर 4 को देखो नंबर 4 Big Bang theory कहूची प्रथमे जेतबेले यूनिवर्स गोटे बिंदु भलिया थिला तापरे जेनी बेलून फुकिले जेमिति नाही बेलून फुकिले पूरा बेलून जोर फुकिला पूरा बेलून पूरा फुली जाउची सेई वाला एटा पूरा बॉडी की एक्सपांड हेई यूनिवर्स ता एक्सपांड हेई केटा के कहिस यूनिवर्स ता एक्सपांड होउची एक्सपांड के कहिस एटा कोटा बिग बैंग थ्योरी से कहिस the universe does not change even it is expanding over time oh से कहूची जे आउ गोटे अछि स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी एटा गोटे थ्योरी ये कहूची जे यूनिवर्स ता एक्सपांड होउची हमें बिग बैंग थ्योरी को मानुचु एक्सपांड होउची किंतु ताहार जो सब रहिची डेंसिटी से डेंसिटी समान रहउची ता कारण एक्सपांड हे गले ए जो सब पतला हे जो ना एडा सब जो डेंसिटी कोन जो ढिला हे जो बेसी एक्सपांड हे गले किंतु से कहउची एठी डेंसिटी सेई बला स्टेडी हे कि रहउची कारण नुआ नुआ स्टार तयारी होउचंती नुआ नुआ गैलेक्सी कोन होउचंती तयारी होउचंती एक्सपांड होउची स्टेडी स्टेट थ्योरी को एक्सपांड होउची सत्य किंतु ता सहित कोन होउची तार बैलेंस हे रहउची ता डेंसिटी ता घनत्वटा बैलेंस हे रहउची जेति कि मटेरियल रहिया कथा रहउची एटा स्टेडी स्टेट थ्योरी होउची कारण नुआ नुआ कोन रहउची नुआ नुआ स्टार तयारी कि सेटा को डेंसिटी को पूरा बैलेंस करी रखुची से जादर कि सेटा स्टेडी हे कि रहउची तेणु एई आंसर हबो बी आंसर हबो बी Number 6 the Montreal protocol Montreal गोटे जगहटा कोडी Montreal protocol
मटेरियल प्रोडक्ट से 46 टा कंट्रीज बसी 987 कौन आमर गोटे ओजन आम जो आटमोस्फियर ट्रोपोस्फियर अच्छी स्ट्राटोस्फियर अच्छी मेजोस्फियर अच्छी थर्मोस्फियर अच्छी एक्सोस्फियर अच्छी ये जो स्ट्राटो एटा ला ट्रोपो एटा ला मेजो थर्मो एक्सो ये गोटे ओजोन लेयर अच्छी ये हमर प्रोटेक्ट करे यूवी अति बाइगणी रश्मि अल्ट्रावायोलेट रेड को एंट्री करे दिए नहीं नचेत हम ट्यूमर है कि हम पूरा रोग होई के मरि जीवा ओजोन लेयर एटा हम बहुत हेल्पफुल हम ओजोन लेयर होला कोन ऑक्सीजन O3 O2 ला एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एटा O3 ओजोन लेयर एई बाट दे कि हमर अल्ट्रावायोलेट आसिया को आसी पारु नाही एटा को हमर किछि कंपनी रेफ्रिजरेटर कंपनी ए जो जिनिस रु हमर बाहर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाई के ओजोन स्फीयर को कोणा करि देछि कोणा कर देलानी ओजोन स्फीयर गोटे होल कर देलानी ओजोन स्फीयर सेही पई गोटे प्रोटोकॉल बसिथिला जो एटा सेविंग द ओजोन लेयर फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन बाय द रिड्यूसिंग ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटा ही बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पई गोटे प्रोटोकॉल पई गोटे बसिथिला गोटे नंबर 6 द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू सेविंग ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय रिड्यूसिंग एट रिडक्टिंग एज रिड्यूसिंग द यूज ऑफ CFC कम यूज करे हमर आ कोन हबो हमर जो ए जो स्ट्राटोस्फियर ओजोन स्फीयर जे नष्ट हबो नाही नंबर 7 तेनु 6 नंबर डी नंबर 7 व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन नर्मदा रिवर बाहर छि हमर कोठी हमर सतपुरा रेंज गोटे अंश राजपिपला गोटे अंश महादेव एडाला मईकाल रे गोटे अंश अछि एटा माने अमरकंटक हिल्स अमरकंटक को दीटा पार्ट रे अछि गोटे छत्तीसगढ़ रो गोटेला MP रे एडाला टोटल सतपुरा रेंज राजपिपला महादेव आ गोटेला मईकाल रेंज ईस्टर्न साइड कोन अछि अमरकंटक हिल्स को दीटा स्टेट रो छत्तीसगढ़ और गोटेला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अमरकंटक को हमर बाहर के महानदी आ जो मध्य प्रदेश अमरकंटक को बाहर छि हमर कोना गला नर्मदा बाहर छि जदि नर्मदा बाहर छि से किछि बेसिन क्रिएट करि छि MP रे तार अछि 85,859 किलोमीटर स्क्वायर बेसिन नर्मदा महाराष्ट्र देखि जाई छि महाराष्ट्र तार अछि 1538 किलोमीटर स्क्वायर बेसिन ता तापर गुजरात रे जाई कोडी पड़ी छि रे गुजरात रे एई जगह रे पड़ी छि एटाला रैन ऑफ कच्छ सॉरी एटाला गल्फ ऑफ कच्छ ए गल्फ ऑफ खंबाट रे पड़ी छि कोडे नर्मदा नदी गुजरात रे जाई छि तार 11399 किलोमीटर स्क्वायर टोटल तार रोची 98,399 किलोमीटर स्क्वायर तार बेसिन जोडे तार MP रे रोची अधिक सेकंड रोची गुजरात रे थर्ड रोची महाराष्ट्र एमिदी क्वेश्चन पळि आसे क्वेश्चन रे डीपली पड़ी जाउची कोडी नर्मदा बेसिन अधिक बेसिन अछि मध्य प्रदेश सेकंड कोडी गुजरात थर्ड लागो महाराष्ट्र तो मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र अछि राजस्थान रे नाही तो 7 नंबर कोन हो बी नर्मदा नदी रिफ्ट वैली देकी जाई छि को तीनोटी रिवर इंडिया रे रिफ्ट वैली देकी जाई छि तीनोटी 3 रिवर्स
नर्मदा ताप्ती ताप्ती अन्य ना आउट अछि ताप्ती तब ताप्ती भी कहि परिया आउटला दामोदर रिफ्ट वैली जातनी फाटी जाइतला जेतला इंडिया आसी पिटी आला यूरेशिया प्लेट सहित सेतो क्रैक आउट हे जाइतला गुल्ली टाइप रो गुल्ली गुल्ली जो गुल्ली कहती गुल्ली टाइप रे से पानी जाई गुल्ली हो गला रेवराइन पर रिवर हे गला जो गुल्ली टाइप रे जानि लो ना नहीं एडी फाटी जाइतला आगे केबि ना हमर जो पिटी हेला कि टेक्टोनिक प्लेट हेतला इंडिया और आगे पिटा खड़क इंडिया रो पूरा तीनटा क्रैक हला खड़क धड़क धड़क एटा नर्मदा ताप्ती एडाला कोन दामोदर एडाई परीक्षा आसुची the dispute about the Mulla Periyar Dam totally अछि केरल तार कंस्ट्रक्शन तार देखभाल तार सेफ्टी तार वैलिडिटी तार फेयरनेस संभाळुची के तमिलनाडु गवर्नमेंट एंटाली कोठी अछि केरल कि से जो पानीटा जाउची पेरियार नदी रो पानीटा ये पेरियार नदी रो पानीटा जो पेरियार नदी रो पानीटा जो जाउची पेरियार नदी रो पानीटा जो जाउची से तमिलनाडु रे ता बेसिनटा रहउची 114 किलोमीटर स्क्वायर कार बेसी दउची कार ए जो पेरियार नदी रो माने जो वाटर कलेक्शन ता रहउची तमिलनाडु के 114 केरल रे रहउची तार 5398 किलोमीटर स्क्वायर जेट एटा हेची सेटा 886 रु जतले ब्रिटिशर्स माने थिले सेही समय माद्रास को डाइवर्ट करिटा पानी तो आनी दिली ता परे परे जतले देश स्वाधीन हला सेतले तार देखभाल रखिला के तमिलनाडु गवर्नमेंट कारण तमिलनाडु किछ अंश रहउची तार ता संभाळुची 114 किलोमीटर बेसी नि रहउची पानी जो कलेक्शन तो एंटायरली अछि डैम ता कोठी अछि जो पेरियार डैम ता कोठी अछि केरल रे अछि सेही पई जेतले से 1998 रे तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइड कला जे हाइट ता टे बढ़ाइबो कार पेरियार मुल्ला पेरियार डैम रा हाइट ता बढ़ाइबो सेतले केरल गवर्नमेंट अपोज कला सेही लागि एटा कोन हबो एटा तमिलनाडु आ कोन केरल तापर नंबर 9 देखिबा एटी एटा भी बहुत इंपोर्टेंट किछि रिवर्स किछि सिटी इंपोर्टेंट सिटी जेमि हैदराबाद देकी को नदी जाई कि हैदराबाद मुसी जेमि हमर जाई कि विजयवाड़ा देकी को नदी जाई के कृष्णा कटक महानदी सेही बळी हमर गोमती जाई कोठी एटा लखनऊ ब्रह्मपुत्र ला गुवाहाटी आसाम रो गुवाहाटी गोदावरी जाई को राजमुंड्री गोदावरी राजमुंड्री आंध्र प्रदेश रे आ कावेरी जाई तिरुचिरापल्ली कोडी तमिलनाडु रे कनेक्शन कराई एक फोर ब्रह्मपुत्र ला कोन बी को 1 एटा आ गोदावरी ला कोन सी को 2 ठीक अछि एटा हो आंसर
सी 9 नंबर सी नंबर 9 हला सी नंबर 9 हला सी गोमती देकी लखनऊ लखनऊ शहर दे गोमती नदी जाई एला मैचिंग पड़ियो परीक्षा रे एटा जानलो हमर सिरोजदौला बोली गोटे थिला नवाब सिरोजदौला सॉरी the battle of Plassey was fought between battle of Plassey was fought between आमर ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे अच्छी ईस्ट इंडिया कंपनी थिला बैटल ऑफ प्लासी हला सिरोजदौला थिला सेही समय हला कोन नवाब ऑफ बेंगल सर इंटरैक्ट विथ स्टूडेंट्स नवाब ऑफ बेंगल राहुल एसपी ओके करूची के जण रिप्लाई दे नथले तो सेही भाई कहि पर न रिप्लाई दउ नथले बेसला लिखिले रिप्लाई देले मो तार इंटरैक्ट करि तुम लेट रे आसले नवाब ऑफ बेंगल थिले कोटिकर नवाब ऑफ बेंगल थिले से नवाब बेंगल के थिला सिरोजदौला करो ईस्ट इंडिया कंपनी मैचिंग हेलानी जदि मैचिंग हेला नहीं जदि मैचिंग हेला नहीं सेही पई नवाब रागी गले गोटे ब्लैक होल ट्रेजेडी करि देले ब्लैक होल ट्रेजेडी कोठी कलकत्ता रा सेंट विलियम जो बिल्डिंग आ सेट कर दे बस टोटल मोर देन 100 पीपल मरी गले कारण सेठी बहुत ब्रिटिश लोक गोटे रूम भीतर रखी देले ये कर देले रखी की अणनिश्वास ही और मर देले जो कित जण जो चाकरी करथिले ताकू कोन गले से जो कोर्ट रे चाकरी करथिले कलकत्ता रे सेटा कोन गले बंदी कर देले 146 जन को बंदी कर देथिले ता दरु 23 जन बंची थिले माने 123 कोन करथिले मरी जाइथिले सेही राग रखी ब्रिटिशर्स माने सिरोजदौला को पाने दबा को भाबिले तेणु आमर प्लासी बोली गोटे जगह अच्छी कलकत्ता रे गोटे थिला से गोटे मैंगो आंब टोटा से मैंगो बजा सेही जगह फाइटिंग हला सिरोजदौला को हरैले सेटा कोनटी बैटल ऑफ प्लासी 1700 केते केबे 57 सेही समय बैटल ऑफ कौन प्लासी नंबर 10 गला कैंसर दियरे नंबर 11 नेम द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ मैकाउले टू मेक इंग्लिश as the medium of instruction से समझते लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 828 रु 835 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ताकू लॉर्ड मैकाउले गोटे आइडिया देले जे जो लोकल भाषा रे पाठ पढुचंती लोक माने स्टूडेंट माने
ताकू इंग्लिश को कन्वर्ट करा इंग्लिश डेवलप करा एटा कहे गले लॉर्ड विलियम बेंटिक नंबर 11 सरीला नंबर 10 पर नंबर कोन 11 तापर नंबर 12 which one of the following party was founded by Subhash Chandra Bose फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस को जापान रू चार्ज दिया गला INA इंडियन नेशनल आर्मी दिया गला 1939 रे तार नेम परे चेंज कर देले के सुभाष चंद्र बोस ता ना कोन करले फॉरवर्ड ब्लॉक जून मास रे कर देले ता नाटा वेरी गुड रश्मिता स्वाई 12D number 13 which of the following was not actively engaged in the social religious reforms in India किछि social religious के 13 नंबर राजा राममोहन राय थिले जने रिलीजियस रिफॉर्म ताकर एक्टिव दिला ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थिले ज्योतिबा फुले थिले किंतु ए जो भक्तेंदु हरिश्चंद्र सी गोटे हिंदी लिटरेचर निर्माण थे हिंदी लिटरेचर के कोनले फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर तेणु 13 नंबर होला कोन डी 13 नंबर डी 13 नंबर डी गाई जने तो आंसर देछ 13 नंबर डी रश्मिता स्वाई खाली आंसर दो ई द एक्टिव मेंबर रश्मिता स्वाई आउ को स्टूडेंट एक्टिव नांदी तेणु ए माने थिले ए मान नथिले व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ म्यूटिनी 1857 रो इमीडिएट कॉज कोन थिला एटा योटे बंदूकर जो गुली न थाए गुली तो काटूस को जाय कोन कहे काटूस तार जो ठिपीटा थिला जो ठिपीटा से काटूस रो से ठिपीटा इजीली खोलिया पई किछि ऑयल लागुथला से ऑयल कहार ऑयल थिला बिग रो आवडला कोन काओर से जो ए ऑयल ता ए जो चर्बी का बिग रो चर्बी आवला काओर चर्बी रे तयारी होतला ए माने ऑयल ता सेही पई प्रथमे अटैक कले मंगल पांडे आगे ओटे रिवोल्ट करी दुईटी ब्रिटिश ऑफिसर को मारी देले मादरे सेही तो आरंभ होला से माने मंगल पांडे को फांसी देले तापर आरंभ हे गला रिवोल्ट ए ग्रीस्ट कार्टेज आमे ओडिया कोन कार्टूस ग्रीस्ट कार्टेज ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल कारण एटा नेइची माने कोन जे माने कहले जे हम काओ को हमें मां बोली मानु हिंदू धर्म को अफेक्ट करछो तुमे तेणु से जो धर्म ऊपर आलोचना चले धर्म ऊपर बेस करी के आरंभ होला गंडोल तेणु एइटा न एइटा फिट जनला तापर से माने पूरा सैन्य माने जाई की अटैक कले ब्रिटिशर तापर से माने किछि थिले रानी झांसी लक्ष्मीबाई टांटिया टोपे तापर माने आसला के हमरो बाजीराव टूर पोला कोन माने माने नाना साहेब तापर बहुत आसीले तापर एबा बहुत जण आसी कि कोन रिवोल्टर मिसिले
एडो नंबर 14 हबो कौन बी आंसर। नंबर 15 नेम 3 इंपोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह कथा आसिला मात्रे महात्मा गांधी कथा आमर चारोटी एग्जाम रे चारटा 1905 गोटे जो रश्मिरा सहित जो नंबर रश्मिरा 15 नंबर आंसर को 1905 रे ए चारोटी बहुत आंदोलन हेला स्वदेशी रिवोल्ट 1920 रेला नॉन कोऑपरेशन तापडाला कोन सिविल डिसओबीडियंस एडाला क्विट इंडिया मूवमेंट क्विट इंडिया सबुठ इंपोर्टेंट यही बेल को महात्मा गांधी ऑलरेडी आसिले महात्मा गांधी आसिले 1915 जनवरी 9 तारिख रे जनवरी 9 प्रवासी भारतीय दिवस को जे जनवरी 9 1915 रे आसिले मोस्ट पॉलिटिक्स को पसिले 1917 ताको द्वारा आरंभ होला नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसओबीडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट ए क्विट इंडिया मूवमेंट को कुआ जाय बॉयकॉट तो सब समय हेतला एठी भी बॉयकॉट कराइतला स्वदेश रे बॉयकॉट हेतला नॉन कोऑपरेशन में बॉयकॉट हेतला सिविल रे भी बॉयकॉट माने जिनिस यूज हम करिवो नाही तेणु एटी हमर हबो नॉन कॉर्पोरेशन राइची सिविल डिसओबीडियंस तेणु आंसर हबो ए एउडा जो रिवोल्यूशन रेफरेंडम रेबेलियन तीसोने एउडा नुया लेफ्ट साइड बॉयकॉट एरा तो आंसर हबो ए 15 नंबर ए आंसर हबो ए नॉन कॉर्पोरेशन सिविल डिसओबीडियंस और बॉयकॉट आईनी सिविल डिसओबीडियंस माने आईनी अमान्य एटाला असहयोग माने सहयोग आमे करिवु नाही तुमर कोनोसी ड्रेस पे आमे यूज करिवु नाही तुमे जो ड्रेस ते आमे स्वदेशी जिंस यूज करिवु तापरे खदी कपड़ा पिंदिवु आमर आम आम इंग्लिश मीडियम में पढिबु नाही हला रश्मिता जानी एबे जानिलो ना नहीं मु जानिली सर एबे जानिलो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हला कोन पूरा आईन अमान्य आंदोलन करिए माने जेबि आज एग्जांपल सर आरंभ करले सिविल डिसओबीडियंस केबि 1930 आरंभ करले नी लुण मारिले जे ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन कर देला लुण के यूज आम गवर्नमेंट माने लुण तयारी कर तुमे जो पाखर जो गां वाला अच्छो सुखेई की लुण तयारी करूचो तुमे तयारी करि परिबो नाही राहुल एसपी कोडे गले प्लीज इंट्रोड्यूस स्टूडेंट कहले जाइछे तुझी आंसर दोनो तेणु 15 नंबर कोन ए नंबर 16 बाय व्हिच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली चाइना सहित एटा ओटे इंपोर्टेंट बंद रखियो चाइना सहित जो मन इच्छा ये करूतले एटा केते चार्टर एक्ट रे एटा कोन हेगला एटा बंद हेगला चार्टर एक्ट 800 केते 33 Number 17 on April 12 9 photo Subhash Chandra Bose hosted INA flag in town एटा पढिए परीक्षा रे 17 नंबर मणिपुर रे
पूरा सब अंडमान निकोबर को कैप्चर करिकी तापर हमर एपुटू मियांमार देकी पसिकी मणिपुर पाखरे से कोन करथिले आईएन इंडियन नेशनल आर्मी फॉरवर्ड ब्लॉक और आईएनए फ्लैग द कोन करथिले मणिपुर रे ये करथिले which direct principles can be described as Gandhian in character. Which direct principle can be described as Gandhian in character? कोडा को गांधीयान कैरेक्टर को जाए ए जो से कहले लोक मान सहित विलेज विलेज जाई की सब ताको दुख सुख बुझिया पाई नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आज इफेक्टिव यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एटा नंबर 18 Number 19. What was meant by the Secretary of State for India during the British rule? British rule में तो पूरा Secretary of State का से माने full कोउतले माने कोन ए British minister given full control over the government of कोन India. C 19 C 20 Simon Commission was boycotted by the national leader of India because Simon Commission was boycotted by the national Simon Commission जानी जो 1928 रे Simon Commission was boycotted साइमन कमिशन के 1928 तार केजन मेंबर थे 8 मेंबर्स जो थिले समस्त अंडर साइमन सब माने कोन थिले जो 8 मेंबर्स थिले सब ब्रिटिश लोक थिले के इंडिया नथले सेही पई ब्रिटिश समान नहीं जेरा साइमन आसी की बॉम्बे रे पहुंचले सब ब्लैक फ्लैग धरि के रिवोल्ट करिया आरंभ कले The Simon Commission was boycotted by the national leaders of India because all members of commission were English. एही साइमन पई जो रिवोल्ट होतिला लाहौर रे माडो हला काकू जो लाला लाजपत राय साइमन पई रिवोल्ट करथले लाठी चार्ज होला पूरा माडो बसियला लाला लाजपत राय मेडिकल पढिले तापर नवंबर मास ना डिसेंबर मास मरि गेले लाला लाजपत राय तापर लाहौर तापर लाहौर रे मरि गइले लाहौर रे आकु मारिया पे मंगल पांडे हरिका जाई की जने गोटे डीएसपी को मारी के आसीबिले एटा कोन दिया हमर लाहौर कन्स्पिरेसी केस ए साइमन 1928 काई लोक माने विरोध करथुले काई लोक माने विरोध करथले कारण सब थिले ब्रिटिशर्स ऑल वेयर ब्रिटिशर्स के इंडिया लोक नथे ए माने कहले जहा तुम मोनोपोली सब तुमे तोरो डिसाइड करियो आम इंडिया रे माने किछि नाही साइमन का बॉयकॉटेड बाय नेशनल लीडर ऑल मेंबर्स कमीशन वेयर कोन Mahatma Gandhi was profoundly influenced by the writing of Tolstoy. Number D.
लियो टोल्स्टॉय 21 हला कोन डी आंसर हला कोन डी 21 हला कोन आंसर हला कोन डी रश्मिता स्वाई 20 बी 19 सी रश्मिता खाली आंसर 21 डी वेरी गुड रश्मिता तापर व्हिच आर फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द स्ट्रांगेस्ट फोर्स कोड स्ट्रॉन्ग नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव है कि रहइबो विथ कोन नॉन वायलेंस आ सी ओटे वेपन ऑफ हंगर स्ट्राइक सिके देथिले वेपन ऑफ हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक रे शिखे देथिले जे नॉन वायलेंस ब्रेव रो सहित माने अहिंसा नीति करिबो एबे हमें रिटर्न बैक करबा 20 टे रिटर्न बैक रश्मिता 22 ए वेरी गुड रश्मिता आउ थरे 22 रु 1 नंबर पर चलो बैक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग is Mahatma Gandhi the strongest force in a non-violence 21 Mahatma Gandhi properly influenced by the number not 1 ru aso 1 pala 1 ku dekho 1 pala 1 आउतरा 1 देखिबा which of the following types of erosion responsible for formation of चंबल ले कोटा गुल्ली erosion नंबर 1 का आउत देखो गुल्ली erosion हमरो erosion टोटल 4 प्रकार अछि आगो फास्ट erosion ने को जाय फ्लैश erosion सेकंड को जाय कोन शीट इरोजन तापर थर्ड को जाय रील इरोजन फोर्थ को जाय गुल्ली इरोजन ऑलरेडी लास्ट फॉर्म ऑफ द इरोजन आ गुल्ली इरोजन ने पूरा फाटी जाइते पानी पूरा ओटे नाळ भलिया जाउतै सेई पई नुई कि से जो गुल्ली इरोजन ता बेसी कोडी चंबल बेले का चंबल माटी ता ने वीक नंबर 2 से ताकू से चंबल बेली रे गुल्ली इरोजन को रिवाइव बोली को जाय रिवाइव इरोजन रिवर छोटा फॉर्म बोल को जाय नंबर 2 which one of the following the greatest circle कोटा सब greatest circle equator हला नंबर 3 where is the hot desert are generally found on the western margins of tropics कारण ईस्टर्ली पटु जो पवन उडा आसे वेस्टर्न ऑलरेडी गला बेले को कोन जाइते से ऑलरेडी तार कोन तार एनर्जी मा तार आ न थाए ता तार वाटर पार्टिकल्स न थाए ड्राई एरिया रहे सेमे डेजर्ट नंबर 4 मून जेतबेले सन कंप्लीटली कवर कर दे आमे देखि पारंतनी सन को ताले आमे जानिबा आमे सबुठु डार्केस्ट पार्ट ऑफ द माने कोडी शैडो रो छनी माने अम्ब्रा अम्ब्रा बी नो बी एला आंसर बी 4 नंबर बी 5 नंबर व्हिच आर फॉलोइंग अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ बिग बैंग थ्योरी कहि छी जे हमरो अर्थ रा को गोटना हमरो यूनिवर्स ता प्रथमे गोटे पॉइंट रे थिला जोटा एक्सपांड हेई की पूरा बिराट बड़ एबे भी बढ़ू छी किंतु हमरो जो स्टेडी स्टेट यूनिवर्स कहूची जे तुमे बिग बैंग थ्योरी सपोर्ट करजु को तुमे जा कहूचरा बढ़ू छी ठीक अछि ओटा डेंसिटी ता समान होची केमिति ना नुवा तयारी होची कोन नुवा तयारी होची नुवा स्टार्स गैलेक्सी तयारी होची ता डेंसिटी ता कोन समान होची स्टेडी हे की होची नंबर 6 द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कोन सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन ऊपर नै की तापर को नर्मदा बेसिन कोडा नै राजस्थान नै नंबर 18 मुल्ला पेरियार डैम ता कोन तमिलनाडु आ केरल एंटायर केरल जी किंता बुझुच के गवर्नमेंट बुझुची तमिलनाडु गवर्नमेंट बुझुची नंबर 9 गोमती कोडी कनेक्टेड लखनऊ ब्रह्मपुत्र ला गुवाहाटी गोदावरी हला कोन राजमुंद्री कावेरी हला कोन तिरुचिरापल्ली द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन का ईस्ट इंडिया कंपनी सिरोजदला नेम द गवर्नर द एक्सेप्टेड व्यू ऑफ माकाओल की नै की इंग्लिश ता को आज मीडियम ऑफ स्टडी किए करले लॉर्ड विलियम बेंटिक व्हिच ऑफ पार्टी वाज फाउंडर सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक ता प्रूव कोन इंडियन नेशनल आर्मी द फॉरवर्ड ब्लॉक करे व्हिच ऑफ फॉलोइंग एक्टिवली एंगेज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म रामचंद्र राजा राममोहन राय पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ज्योतिया बोले एमान थिले किंतु भट्टेंदु हरिचंद्र थिले कोन से थिले कोन माने से तोरे ओटे ये थिले कोन थिले ओटे हमर लिटरेचर हिंदी लिटरेचर फादर तो कोने इमीडिएट म्यूटिनी कोन पाइला ए जो एनफील्ड राइफल गुड़ी उडा रे जो लागुतिला कोन लागुतिला जो माने काटुस रे तारे लागुला तेल उडा लागुला एटा गाई आ भुसरी चर्बी होतिला
जोटा कि हम रिलीजियस ऊपर इफेक्ट कला तार ताको अटैक माने कोन से रिवोल्ट आरंभ होला मेन थ्री इंपोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन माने असहयोग करबा सिविल डिसोबीडियंस माने ला कोन एटा ए रस्पिटा एटा भलार मन रख कारण एटा तू कहि परलनी सब आंसर दे परलो 15 नोटा आंसर दे परलनी एटा एते माने सहज जिंसटा नॉन कोऑपरेशन माने असहयोग इंडियन माने ब्रिटिश माने सहित असहयोग कले सहयोग कले नाही सिविल डिसोबीडियंस ताको आईन मानिले नाही बॉयकॉट कले बॉयकॉट माने माने कोन जिनिस माने यूज करिवेनी बॉयकॉट तुमे भाबे बॉय आनीटा बेकर काटी दो बॉयकॉट टा नो बॉयकॉट माने कोन जिनिस माने कोन यूज करिवनी माने ताको जिनिस हम यूज करिवा नाही बॉयकॉट ए तीनटा ला कोन थ्री इंपोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कोन सत्याग्रह किनु ए जहा भी होबो सेडा सब कोन माने नॉन वायलेंस मेथड आ को चैप्टर एकटा हमर कोन हला 833 चाइना सहित मोनोपोली ट्रेड टा कोन हला माने कंप्लीट हला 17 नंबर कोडी हमर माने टेरिटरी यूनिट सुभाष चंद्र बोस आइए नेला कोडी मणिपुर रे आड उडैथिले न मणिपुर रे तापर व्हिच प्रिंसिपल एज डेस्टर गांधीयन इन कैरेक्टर गांधीयन हला कोन और ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत आर्ट इफेक्ट यूनिट ऑफ सेल गवर्नमेंट एटा ला द ब्रिटिश गिवन फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 हला साइबर कमिशन मध्ये बॉयकॉट बाय नेसला कारण सब मेंबर कोन थिले इंग्लिश थिले केउ को माने भी इंडिया नथिले महात्मा गांधी कार माने टोल्स्टॉय को फॉलो कर लियो टोल्स्टॉय ताका राइटिंग दा टोल्स्टॉय राइटिंग ओवर होतला 22 व्हिच आर फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड पूरा नॉन वायलेंस ऑफ द कोन ब्रेव ओके थैंक यू आज एती डिस्कस ला बहुत थैंक यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रेलवे एग्जामिनेशन prepare yourself is your teacher तुम्हें निजे तुम्हारो टीचर आमे टीचर माने आमे सब जानी समिति किछि नाही तुम्हें भी तुम भीतर नॉलेज अछि जे जति समय पढिबो से जॉब पाइबो अधिक ज्ञानी हेई परिबो तुमको पढ़ियार अछि तुम्हें 24 आवर्स को डिवाइड करी 24 आवर तो टाइम टेबल करी दियो टोटल 1 वीक हला 7 डेज 1 डे 24 आवर्स तेरो तुम्हें को स्टाइल ले पढिबो पाठटा को स्टाइल ले पाठ पढिबो तुम्हें मोबे जो स्टाइल ले लेकिन सही स्टाइल ले पाठ पढिबो जो स्टाइल लगा भी सही स्टाइल पाठ पढ़ियो तो कोई की स्टाइल देखवा दे सॉरी 24 into 7 स्टाइल एई तरह जे पाठ पढ़िबो लॉकडाउन हमर जो एबे बर्तन जो कोविड 19 पर जो जॉब उडा हबो से निश्चित जॉब टा पाइबो बर्तन जो दुख समय अछि से दुख समय रे तुमको माने कोन एबे सब पूरा सेही सब जॉब टा पाइयो पुनी रेलवे तो दिने ना दिने एग्जाम हबो दिने ना दिने रिजल्ट बाहरिबो तुमे ता भीतर थिबा दरकार तेनो एई जो स्टाइल टा कहली 24/7 स्टाइल तुमे घरे बसी तुम गोड़ हाथ मांदाळे हे जो तन गोड़ हाथ बिंदु थिबो किंतु तुम माइंड टा जदी एक्टिव थिबो माइंड जदी तुमरो माने पूरा स्ट्रांग नथिबो कि ए बॉडी तुम पई किछि नुओ टिके खाली माने नै कि रश्मिला सही टाइम होनी टाइम का माने सोइबो जदी 12 घंटा टाइम केमबे हो आ सोइबार गोटे 7 आवर्स सोइबो माने लॉकडाउन समय तो टाइम होनी तू कोन करू रोसे करू ना एटा माने 24/7 स्टाइल 24 माने माने एवरी मोमेंट ओहो मेरेड हेले भी कोन हल मेरेड माने तो आउरी तुमर टेंशन फ्री हे गला हां नीड टू मैनेज टाइम मेन हला हमें जदी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज रश्मिता सही शाशुर अछ कि रोसेटा बंद कर दियो रश्मिता सही शाशुर अछ कि रोसेटा जदी बंद कर दबो रोसे को शाशु हरिया करिवे रोसे करी तुमको देबे करी की जॉब पाई गला पर तुमे ता माने लोक रखि दो ओटे आ तुमे जदी रोसे करी की दबो ससुर ड्रेस सफा करिवो ताल तुमरो जॉब होबार चांस नहीं एई स्टाइल पढियार अछि
24 इंटू कौन 7 स्टाइल आउ गोटे पानी बोतल पूरा फुल रखी दबो वाटर बोतल गोटे माने जस्ट 5 मिनिट्स गैप रे माने कौन करिवो 5 मिनिट्स गैप रे पानी पिउतो कारण पानी ता पीले हमर ब्लड सर्कुलेशन भला रहबो हम ब्रेन को सर रोसे बंद कर देला आउ पढ़ी पारिबे नहीं ना पढ़ी पारिबे ने रोसे बंद कले अन्य मान रोसे करी देबे ना अन्य ये रोसे रे बहुत टाइम जाए एटी जो माने आसी कि मु कोइ होटल बजे का रोसेटा बहुत टाइम मु रोसे करूची हम घर में जानि रोसे करूची रोसेटा बहुत टाइम पड़ाए कारण रोसेटा ही तुमे तो माइंड ता रहयो भात बसै तो माने जाई कि देखि आसे हेला ना नहीं ये हेला ना नहीं ए तो रोसे रे बहुत टाइम पड़ाए आमे खाई अधिक दिन रोसे करिया अधिक भी खाई देला माते कोन पेट फुल हे जो भात तो बेसी खाया कत न अल्प गैप रे जत्ते पानी पीबो अल्प खाइयो 4 थर 5 थर खाओ 4 थर 5 थर खाओ कि अल्प टिके एनर्जी दउतो पढुदो एनर्जी आ एई जो स्टाइल जब न पडिबो एवरी मोमेंट डेडिकेटेड फॉर कोन एवरी मोमेंट फॉर एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी हो पछे आगे रेलवे को तुमको पसी जीवार अछि रेलवे रा प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सब जदी रियल सेंट्रल रेलवे जॉब पर सेंट्रल माने जदी नै कि तो ना ना रसना करि पारे के रस के रोसेई आ सासुर चिंता करियो होई परिबो सासुर चिंता छाडी दियो निज कथा टिके भाबो जॉब हेगला परे नै कि सासुर को एबे तुमे करो मु जॉब करसला परे नै ताकर करी हला निजे करो मते मु निजे रोसे करछि मु जानि छि रोसे कला माने टाइम लॉस आमे खाउछु कम माने बेसी खाइ इंटरेस्ट नै टाइम ता हमर ऑलरेडी माने सरी जाउछि टाइम रा अजता नष्ट हो जाउछि हला जे सार रोसे ही टाइम नष्ट हो सेवा रोसे ही टाइम नष्ट करछि पुणी ससुर रे बहुत रकम खाइबे 5-6 रकम तरकार नदेला मंदो करिवे तो रोसे कर बेसी तुमे चपाती खाओ चपाती रे हमर 12% प्रोटीन रहउछि भात रे ओनली 6 to 7% प्रोटीन रहउछि राइस रे तेनो ए राइस ता के खाइले क्या प्रॉब्लम चपाती खाओ बेसी चपाती खाइबोनी मेल गोटे खाइबो अजर रे 3 to 4 चपाती फीमेल खाइबे 2 दीटा चपाती आ एई चपाती तो खाइबो केते ना 4 थर दिन खाइबो ब्रेन काम दउतो क्लास रे पढुतो हला आउटे योगा करो योगा रो मेन जिनिस हला योगा माने कोन योगा माने हला तुमे जो आम जो भितु इनहेल करूनाती एटा कोन इनहेलेशन आ बाहर जोटा छतनटा कोन एक्सहालेशन ओडिया रे जोटा भितु नोते ना कोन प्रश्वास बाहर जोटा छडजनटा कोन निश्वास आमे कोन करिया 10 मिनिट 10 मिनिट्स पर डे 10 मिनिट्स कोन करिया कहला एबला प्रैक्टिस करिया पूरा लंबा निश्वास नबा कोठी आम भीतर को रखिबा चेष्टा करिया केते समय हम रखि पारुचंती पुणी त को करिया हम एक्सहालेशन करिया एई बला 10 मिनिट कर तुमर ब्रीथिंग प्रॉब्लम बारिबो नि पढिबार क्षमताटा बढ़ी जिवो बुझल मेन हला सब डिपेंड करती योगा रा इनहालेशन आ आदि तो कोई सर प्रिपरेशन करिवो 24/7 स्टाइल आ खाली सब्जेक्ट ही पढनी सब्जेक्ट भी तुमर रहिबो केते परसेंट कहला 70% पर डे 70% जीएस सब्जेक्ट पढिबो 30% ऑब्जेक्टिव बुझ न बुझ ट्राई मारी कि पर डे मिनिमम 100 टा क्वेश्चन करियो चेष्टा करो 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आ 70% सब्जेक्टिव हला अब खाली सब्जेक्ट पढियो परे एवरी डे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्ट इटा अधिक 70% आ ऑब्जेक्टिव लगे 30% ऑब्जेक्ट इटा 70% करिवोनी ऑब्जेक्ट जदी कंटिन्यू ताना उल्टा हे दिबो बुझलो ऑब्जेक्ट पिला खाली ऑब्जेक्ट करतनी बुझ न बुझ पढ गीता रुच न रुच खापटा एटा करिवार नाही बुझलो ठी तेनो बेस्ट ऑफ लक तुमे लागो कारण एबे टाइम अछि केबे परीक्षा हो माने माने आ परे सांसा डेट बाहर जो तुमे जानि परिबोनी डेट बाहर सेतले समस्त रेडी हे जी तुमे आगु रेडी हे जाओ 24/7 स्टाइल 24/7 स्टाइल
24 into 7 style. 24 into 7 style. Don't waste time for cooking. Cooking by no time. Breathing. Breathing. breathing by amaro wala time दियो. Cooking by no time. Cooking by time नहीं. Cooking by जे time जरा गोला time loss हो. हला. Only eating by time दियो. Eating by अल्प समय. Drinking by water सबुल. Water 5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes से water पीबो. बुझेलो. मुझे पिया प्रॉब्लम करते छी पढ़ो कि ना. एका सहित सब बेसी पानी पीबोनी. एका सहित बेसी पानी पीबोनी. हला अल्प पीबो. खाद्य भी अल्प खाइबो हला. बेसी टाइम खाओ न. हमर सब खाद्य डिपेंड करे हम मेमोरी ऊपर. मेमोरी ऊपर हम खाद्य और एक्सरसाइज डिपेंड करे. हम मनोबल जदि स्ट्रांग नथियो नि हम सब चाकरी पाई जाई परिया. पिला अछन गोटे वर्ष आईएएस पाई जाउछन प्रिपरेशन करी. न्यू माने पिला सब अछन जने ग्रेजुएशन पास करे गोटे वर्ष पाई जाउछन. बोला प्रिपरेशन स्टाइल दउ ये करियो. आ डोंट वेस्ट टाइम इन कुकिंग. जदि मैरिड अछ तुमे काम कहि दियो घरे से माने करि दियो. मते ऑर्डर कर दियो. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. राहुल एसपी थैंक यू. रश्मिता स्वाई थैंक यू. आउ जने थिले से पळेले 9 की 9 से भी थैंक यू टू यू. और साई केसरी बाबू थैंक यू. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆଉ